Hello everyone, welcome to APTI PLUS Academy for Civil Services. This is a special video on the monthly compilation for the PIB, and I'll be discussing compilation for the month of February 2021. So whatever news that has been reported in this particular month, we'll see some of the important news that is relevant both for the prelims and mains examination. So let's get started. And before we proceed, these are the content that I'll be discussing. The news has been segregated and divided into the General Studies paper accordingly, like General Studies paper 2, General Studies paper 3, some foreign policies and defense exercise that was there in the news, and the last is some short liner news that would be relevant both for the prelims and mains examination. So starting the first, that is General Studies paper 2, we'll see what are the important news coming from this section. So first is voluntary vehicle scrap policy. The government has come up with the scrap policy, and scrappage is again, it can create a lot of revenue to the government. So how this will work, let's see. So the central government has recently announced a voluntary vehicle scrapping policy. This is a voluntary policy that government has launched. This is not a mandatory, and this aims at taking polluting fuel guzzling vehicles off the road, right? Because the level of pollution is increasing in India, and at the same time they are trying to reduce this through scrapping the old cars, right? तो ये बहुत ही important है. कोई भी आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखो कि इस तरह की पॉलिसीज ऑलरेडी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. And this will help encourage the fuel efficient environment and friendly vehicles, thereby reducing the जो pollution है खास करके उनको कम करेगी. Oil imports जो bill है that would be again reduced. Now the vehicle scrapping policy that has been a long-standing demand for the automobile sectors, because what we see like the cars, the vehicle that is old, 15-year-old, 20-year-olds, that is not that much efficient with the fuels, right? And they create a lot of pollution ultimately, which is impacting the air quality also. तो खास करके जब से एयर क्वालिटी इंडेक्स आई है उसके बाद से गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इसको भी इससे इंटीग्रेट किया जा सके, और इस चीज़ से पॉलिसी से जो हमारी AQI है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी. Now the draft policy outlines what exactly the draft talks about. So Ministry of Road Transport और Highway ने इसकी जो पूरी draft policy है उसको envisage किया था, and they said that it would include a waiver of registration fees. जो registration fee होगी वो state को खास करके, और state भी reduce करेगी अपने road taxes को on the new vehicle purchased having an one scrap. अगर कोई भी individual अपने scrapped गाड़ी को बेचता है तो उसको दो तरफ से benefit मिलेगी. एक तो registration fee की पूरी waive off की जाएगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रोड टैक्स उनसे नहीं लेगी, राइट? सो रोड टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन फी अगेन कॉस्ट प्राइजेस विच एड ऑन टू योर ओवरऑल बजट, राइट? अगर आप कोई भी कार खरीदने जाते हैं तो वो आपको एक शोरूम की प्राइस बताते हैं, राइट? तो एक शोरूम प्राइजेस में रजिस्ट्रेशन के चार्जेस इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस के एक्स, ये जो एक्स होते हैं उसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती है. इफ़ यू टेक अ कार यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन चार्जेस, द इंश्योरेंस फी और द रोड टैक्सेस, राइट? ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं. तो जो भी इंडिविजुअल अपने पुरानी गाड़ी को बेचते हैं स्क्रैप्ड में, सो अकॉर्डिंगली दे वुड बी वेव्ड आउट. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो उनको मिलेंगे. अब व्हीकल्स जो 15 ईयर्स से ज़्यादा पुराने हैं एंड दे आर वेरी लो रीसेल वैल्यू, voluntary sending them to the scrapyard offer the owner monetary compensation. Definitely this is another way where a monetary compensation can be provided to buy a new vehicle, right? So this is a draft policy outline. Now और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें या रिन्यूएबल की बात करें तो रेजिंग द रजिस्ट्रेशन फी फॉर द रिन्यूएबल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स. सो अगर कोई गाड़ी रजिस्टर होती है 15 ईयर के बाद तो उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस काफ़ी अधिक होंगे. Now higher fee for issuing of the fitness certificate and fitness testing of the commercial vehicle older than 15 years. So what government is trying, they are trying to penalize the people who have used vehicles or commercial vehicle for more than 15 years by charging higher taxes, right? और restrictions की अगर बात करें, restriction by the state on the entry of old vehicle in the city limits the high road taxes car older than 15 years. और जो भी कार 15 years से ज़्यादा उसमें higher road taxes भी पे करनी होगी, right? So the government is trying to make the penalty through the monetary, right? Monetary penalty करने की कोशिश की जा रही है. Now the passenger vehicle older than 20 years would invite the similar disincentives. So जो भी गाड़ी 20 years से पुरानी है उनको किसी तरह से कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगी. Even they have to pay the higher charges for registration, for the fitness certification and for the other road taxes, right? Now the second news, that is consumer welfare fund. This is with regards to the consumers.
सो अंडर द सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 1970 गवर्नमेंट ने ये सेटअप की है जहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाई जाएगी. दिस विल एम टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स. किस तरह से ये बेनिफिट करेगी, विल डिस्कस दैट ऑल्सो. नाउ इट हैज़ वर्कड सक्सेसफुली अंडर द एक्सटेंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड CWF की जो गाइडलाइन है 2019 की, उसमें बहुत सारी जो ऑब्जेक्टिव्स थी उनको ऑलरेडी अचीव कर लिया गया है एंड गवर्नमेंट ने कंज्यूमर वेलफेयर जो फंड है उसको सेटअप भी किया है. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से टू इंश्योर कि जो कंज्यूमर फंड है उसमें प्रॉपर से पैसे बने एंड अल्टीमेटली दैट इज बेनिफिटिंग द कंज्यूमर. सो पैन इंडिया कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन वुड बी देयर विच इज ऑल्सो देयर एट प्रेजेंट, जिसको जागो ग्राहक जागो के नाम से आपने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा. दिस इज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर राइट, कंज्यूमर राइट्स. Now providing grant in aids to the state to generate awareness about the regional languages. So बहुत सारी ऐसी जो grant in aids होती है वहाँ पे awareness फैलाई जाएगी within regional languages. Right? Regional languages have their own limitations, so they will confine to the other areas as well. Now disseminations of consumer awareness message through the social media. बिकॉज आज जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनकी भी यूटिलाइज की जाएगी इसमें. Now, celebration of World Consumer Right Day and National Consumer Day would be again celebrated in India. और अगर BIS की बात करें, Bureau of Indian Standard, they have launched mobile care app to track the status of their cars. Now, government has set up the National Consumer Helpline, right? तो जो consumer helpline है वहाँ से भी आप चीज़ों को track कर सकते हैं. And अगर BIS mobile app की बात करूँ, so this would be providing another level of standard that is required. So this is the helpline number 1800111400 and these are the small code. This is not relevant but I'm discussing because this you can utilize this, something which have to use in your daily life. You can share this with your friends, with your families so that they can aware about the consumer rights. Now further to cater the needs of the consumer, ये ज़रूरी है कि जो जोनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है वो भी सेटअप किए जाएंगे अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर, गुवाहाटी एंड पटना. So government is definitely trying to expand the consumer level grievances base so that it can cater a large number of peoples, right? Now urban local bodies reform, definitely this is something which was again long pending और urban local bodies की reform काफ़ी ज़्यादा important भी है. So the Goa has become the 6th state in the country to be successfully undertaking the urban local bodies reform stipulated by the Department of Expenditure, that is under the Ministry of Finance. So you just need to remember this name because it can be asked in any other examination also. तो गोवा ने जो गोवा की जो 6th जो स्टेज आई है या फिर जो 6th स्टेट बनी है उससे पहले कुछ और स्टेट्स थी दैट इंक्लूड आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, Rajasthan and Telangana. These were the 5 states they have completed the urban local body reforms. Now on completion there is a set of reform. These 5 states have been granted a total additional borrowing permission of 10,435 crore rupees, right? So Goa is a new name that has been added to the urban local bodies reform and this has become the 6th state and before that we have 5 states which I have named here, right? Make sure आप ये सारे नाम को याद रखें. Now about the urban local bodies, how things will work. Reform in the urban local bodies and urban utility reforms जो कि खास करके एम करती है strengthen करने की urban local bodies को in the state और ये provide करेगी with better public health and sanitation services to citizen. So once the urban local body is strengthened, it's well functioning, definitely it is going to benefits the citizen of the particular area. And economically rejuvenation of ULB will also be able to create a good civic infrastructure. So this is something that is required at this point of time. Now Mahabau Brahmaputra, this is again important for your questions on the prelims examination with regards to geography and map work. So make sure you see the map and locate the places as well. So the Prime Minister has recently launched Mahabau Brahmaputra, the foundation state of Dhupuri Buluri Bridge, right? So this is something which can be asked, कौन से river कहाँ cross कर रहे हैं, कौन से national park हैं उस area में. So these are the things that you should take a note of. Now talking about this entire project, so this was being launched to mark the inauguration of RoPax vessel operations between the Nimati and Majuli Island. Majuli is again one of the very significant island. यहाँ से prelims में कई बार सवाल पूछे भी गए हैं. Make sure आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ लें. You can Google it or you can give it a check on the Wikipedia as well.
सो प्रोग्राम की अगर बात करें, दिस एम्स एट प्रोवाइडिंग सीमलेस कनेक्टिविटी टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. जो भी पूर्वोत्तर भारत है, खास करके ईस्टर्न इंडिया, दे वुड बी कंटिन्यूसली कनेक्टेड, एंड दिस वुड इंक्लूड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर द पीपल रिसाइडिंग इन द ब्रह्मपुत्र. आप अगर आसाम की बात करें, सो इन एंटायर आसाम द ब्रह्मपुत्र रिवर इज कमिंग, दैट इज फ्लोइंग. सो दैट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम में इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो ईस्टर्न रीजन को काफ़ी हद तक डेवलप करते हैं. Now about Majuli Island, how what is Majuli, how it is going to benefit that area, and how it is important for you in the examination. So Majuli is a river that is there in the Brahmaputra, or in 2016 it has become the first island to be made district in India, right? ये first island district थी जिनको बनाया गया. और इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जो ध्यान रखनी है, दैट इज लाइक इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज कोर्स ऑफ द रिवर ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज मेनली ड्यू टू लोहित. And Majuli is adobe of the Assamese and Neo-Westernized site cultures, right? और ये जो आइसलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर साउथ में, एंड केरेकुटिया स्टूटी इज एन आर्ट ब्रांच ऑफ द ब्रह्मपुत्र दैट जॉइन सुबर्णश्री रिवर इन द नॉर्थ, राइट? तो सुबर्णश्री जो रिवर है नॉर्थ में, उसको ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को, एंड खेरकुटिया चूटी इन द ब्रांचेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र, राइट? So this is all about the Majuli Island. It has become the first island to become a district in the India. Now, comprehensive economic cooperations between India and Mauritius. So between CECP, this is very important that India has come up with coming to the boosting of the relationship between the Mauritius. So this would be giving another edge to the bilateral relationship between India and Mauritius. So the cabinet has recently approved signing of the comprehensive economic cooperations, जहाँ पे इंडिया और मॉरिशस ने ये सिग्नेचर किए. In 2005 also, India has signed the largest trade partnership with Mauritius that include the services, exports of goods and services, and this was the largest, to be one of the largest export of goods and services. Now bilateral trade की अगर बात करें, so India and Mauritius has registered the growth of 233%, right? You can see the growth. This sum ups to $206.76 million in the US dollar. और अगर अभी की बात की जाए प्रेजेंट में फाइनेंशियल ईयर, इट हैज इंक्रीज टू $690.02, right? That is million dollars that is there. So you can see the gap, the increase is huge, and that sum ups to 233%, right? 233%. Now what are the salient features of India Mauritius CECPA? So जो भी economic cooperations हुई हैं, that institutionalize and encourage the trade between the two countries. Definitely this is something that give the moral boost to both of the country. And ये जो agreement है मॉरिशस के साथ, यहाँ पे 310 export items को list किए गए हैं from India, including the food stuff, beverages, agriculture products, textile articles हैं, base metals हैं, electrical goods हैं, electrical items, plastic, chemicals and other articles would be something that would be the part of the agreement, and they can export these items. राइट नाउ इंडिया ने अपने 95 सब सेक्टर्स को भी ऑफर किया, जहाँ पे 11 ब्रॉड सर्विसेज हैं. यू कैन रीड दिस, आई एम नॉट रीडिंग इट आउट, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन रीड इट आउट. इट इंक्लूड हायर एजुकेशन, एनवायरमेंटल हेल्थ, tourism, travel related services. These all things are included, and both sides have also agreed कि वो negotiate करेंगे automatic trigger safeguard mechanism, that is also known as ATSM. We have discussed this on our daily news analysis also. If you're a regular viewer of our channel, you must be aware of this, right? So highly sensitive product within 2 years, and signing of the agreement was already being passed between the India and Mauritius. Now क्या क्या और important measures लिए गए दोनों country के बीच में to curb the corruptions. So India, in pursuance with the commitment to the zero tolerance against the corruption, बहुत सारे important measures लिए गए. First include implementation of e-tendering of the public procurement, right? So this is something which make it more transparent. Introduction of e-governance and simplification of the procedures and system, or introduction of government procedure through the government e-marketplace. So e-marketplace is again very important. Possible question can be asked in the prelims examination. Make sure आप इसको देखें. जिस तरह से Amazon, Flipkart इंडिया में ऑपरेट कर रही है, उस तरह से गवर्नमेंट की अपनी सेल्फ एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट e-marketplace where you can buy the things. Now coming to the General Studies Paper 3, whatever news that was relevant in this section, we have segregated to the General Studies Paper 3. So the first is World Sustainable Development Summit 2021.
So recently, the Prime Minister has inaugurated the World Sustainable Development Summit 2021 via video conferencing amid the COVID-19 pandemic. It was not possible to organize a physical summit. So the theme for this summit was redefining our common future, that is safe and secure environment for all. सो टैगलाइन थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई बार जो 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वहाँ पे डायरेक्ट इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. Now, moving to the other point, that this is the redefining our commitment to the future safe, secure environment. This is the theme, and it has taken place virtually in February 10 to 12 from New Delhi itself. And the organization is TERI. आप TERI के बारे में भी पढ़ सकते हैं डिटेल में. No, it is again important for the prelims examination. Now about the summit, it's like World Sustainable Development Summit जो थी flagship program है of the Energy and Resources Institute, that is TERI. और ये 20th summit है. This was the 20th summit. The number can be again important. It can be asked in any other examination. और जो summit है वो कोशिश ये करती है कि जितने भी गवर्नमेंट बिजनेस लीडर है, एकेडमिशियन है, क्लाइमेट साइंटिस्ट है, यूथ है, सिविल सोसाइटी है, ये सारे लोगों को आगे जो क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स हैं उनके अगेंस्ट they can give the measures, and at the same time they can give their views how the things can improve in the country, right? Now the World Summit 2021 is being held completely online amid the COVID-19 pandemic, as I've told you. और इसमें जो thematic track थी, plenary sessions थे, business sessions थे, that was also there, that was included, and this session was being organized and the summit was being participated across the globe. जितने भी countries हैं, developed countries हैं, सारे लोगों ने participate किया था इस पे. Now इंडिया और SDG की कमिटमेंट से अगर बात करें तो इंडिया के जो अपनी कमिटमेंट है टू रिड्यूस द ग्लोबल एमिशन, दैट इज बाय 33 to 35%, and a drop of 25% in the emission is already there, and India has achieved something. अगर SDG के टारगेट्स में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया ने अचीव की है. वी आर ऑन द पॉजिटिव साइड. And talking about the target, setting the 450 gigawatt for the renewable energy generation capacity by 2030. So this is what India commit, and they are moving forward कि जो 450 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 2030 तक अचीव की जा सके अंडर द SDG गोल्स. Now national beekeeping and honey missions. This can be again a possible question in the prelims examination as well. So the central government has approved the allocation of 500 crores for national beekeeping and honey missions. ये 3 साल के लिए रखा गया. इसकी जो ड्यूरेशन है that is for 2021 to 2023, and this is under the recently announced आत्मनिर्भर भारत scheme, right? और NBHM की बात करें, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, दैट एम्स टू प्रोवाइड ओवरऑल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग. किस तरह से इंडिया में इंडिजिनसली हनी को डेवलप किया जा सकता है. इवन द कंट्री कैन अचीव द स्वीट रेवोल्यूशन. नो, दिस कैन बी अगेन इंपॉर्टेंट. हनी के जो प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने स्वीट रेवोल्यूशन का नाम दिया, जहाँ पे नेशनल बी बोर्ड इसको ज़्यादा प्रमोट करेगी और जो ओवरऑल हनी की प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा. Now, what is the objective of this mission? The main objective of this mission is to promote holistic growth of the beekeeping industry from income and employment generations, जहाँ पे farm और non-farm household को include जाएगा, and it will also enhance the agriculture, horticulture productions, right? Now, developing infrastructure facilities include setting up of integrated beekeeping development centers. That is something that would be important. Honey testing labs बनाए जाएंगे, disease diagnostic custom hiring centers बनाए जाएंगे, epitherapy centers and nucleus stock bee breeders. These are something that would be developed under this missions. And empowerment of women is again very important. Empowerment of women through beekeeping would be done under this mission. Now, foreign policies and defense exercises. Some of the important foreign policies and defense exercises that has taken place between India and other countries. So first is India and Bangladesh, that is 19th Home Secretary level talks that took place between India and Bangladesh. ये virtually held हुई थी, and this was with regards to the 50 years of Bangladesh Liberation War and the establishment of diplomatic ties between these two countries, right? Now, second Maritime Summit, that is 2021. ये जो event है that has been organized by the Ministry of Shipping, Port and Waterways, और ये jointly FICCI के साथ इसको Ernst & Young, E&Y जो है, इन्होंने knowledge partner थे इसमें. This can be again a question. And 24 countries are set to participate in this summit. So second Maritime Summit in collaboration with Ministry of Port, Shipping and Waterways, FICCI, Industrial Partner and EY as in knowledge partners. Now, India and Japan, the government of India has
again signed an agreement, memorandum of cooperation, MOC कहते हैं इसको. This is between the basic framework and partnership that would take place. और specific skilled worker के लिए इंडिया और जापान में खास करके exchange होगी between the intellectual exchange, the skill exchange would take place between India and Japan. और जापान कुछ यहाँ के लोगों को बेसिक स्किलिंग के लिए ट्रेनिंग देगी. एंड एट द सेम टाइम दिस वुड बी फेवरिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ मेक इन इंडिया, जहाँ पे इंडिजिनस ट्रेनिंग लेकर के लोग वापस यहाँ से अपनी एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं. Now, under this thing, many things would be again there. So, industrial machinery, manufacturing industries, electronics, constructions में, automobile sectors में, agricultures हो गई, beverage manufacturing. So, these are some of the sectors where a job-oriented skill would be provided from Indian worker in Japan, right? So, these are the broad area upon which Japan would be providing the skill development courses. Now some short liner news that is relevant both for the prelims and the mains examination. Mostly the things would be more relevant for the prelims examination only. So Adi Mahotsav, Vice President of India, has recently inaugurated the tribal festival Adi Mahotsav. और ये जो आदि महोत्सव है that was started in 2017, जो इस बार की थीम थी 2021 के लिए, वो थी celebrating the spirit of tribal craft, culture and commerce. So जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं खास करके ट्राइबल मिनिस्ट्री इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. अर्जुन मुंडा एज अ मिनिस्टर एंड रिच डिशेस वाज देयर फ्रॉम झारखंड. देवर दीज आर द डिशेस दाल पिट्ठा, ढोक्सका, चिकरा रोटी, दीज वर द पार्ट. महाराष्ट्र से गुरुडी ज्वार पापड़ एंड महालपट्टा. इन तमिलनाडु दैट इज समायुंदरई, रागी कली एंड तेनाई राइस. These things are important because कई बार कल्चर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नागालैंड फ्रॉम द पॉक डिशेस, सो दे कैन आस्क यू कौन से डिश कहाँ पे. इवन मैच में भी ये चीज़ें पूछे जा सकती हैं, मैच द कॉलम्स में, राइट. सो मेक श्योर यू इंश्योर दिस बिकॉज गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स टू बूस्ट एंड रिप्रेजेंट द ट्राइबल इन मेन स्ट्रीम. नाउ मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा, बेसिकली ये जो स्कीम है द टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए लॉन्च की गई थी. यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा दे वुड बी क्रिएटिंग द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्लग एंड प्ले फैसिलिटी एंड इनेबल द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल चैंपियन इन द स्पोर्ट सेक्टर. और जो मित्रा है दिस वुड बी लॉन्च इन एडिशन टू द प्रोडक्शन ऑफ लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो PLI स्कीम है उसमें मदद करेगी. एंड एट द सेम टाइम दिस वुड बी इम्प्रूविंग द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द टेक्सटाइल पार्क्स. So this was already proposed in the budget this time. So it aims to make the textile industry globally competitive, attract large investment and boost employment generation and the export. और जो main feature है is to create a world class infrastructure with plug and play facility और 7 textile park बनाए जाएंगे over 3 years. So this is what the target of government is, and the initiative is known as MITRA, Textile Mega Investment and Textile Parks. Now ASEAN India Hackathon, this was organized by Ministry of Education, and they have launched the ASEAN India Hackathon, and this hackathon will provide a unique opportunity to India and ASEAN countries to solve their common identified goals, जहाँ पे दोनों कंट्री ब्लू इकोनॉमी खास करके जो एजुकेशन है उन पे काम करेगी. एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी वुड बी प्रोवाइडेड to go through the economic and cultural ties so that education, science and technology is getting a boost in the ASEAN countries. Now, Chauri Chaura incident, as you know, this was an incident which took place on the February 1922, and it was there in the Gorakhpur district when it was United Provinces in Uttar Pradesh, when large group of protesters participating in the non-cooperation movement has clashes with the polices and they have opened the fire, right? So यहाँ पे जो timeline है वो आप देखें क्योंकि it is already about to complete the 100 years, so this would be again very important. Now in retaliation जो डेमोन्स्ट्रेटर थे उन्होंने वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है उसको जला दिया था. सो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में सवाल अक्सर इस तरह से पूछे जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे. Now Mahatma Gandhi, who was strictly against this violence, he hated the non-cooperation movement. उन्होंने halt कर दिया था अपने non-cooperation movement को. Even he was about to withdraw this movement because of the incident that took place and he withdraw this, right? चौरी चौरा movement के बाद गांधी जी ने non-cooperation movement को withdraw कर लिया था, right? Now Agriculture Technology Management Agency, that is ATMA agency. This is a central sponsored scheme जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक्सटेंशन प्रोग्राम दी जाएगी ताकि वो रिफॉर्म कर सकें. एट द सेम टाइम जो अभी प्रेजेंट की अगर बात करें 691 डिस्ट्रिक्ट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज अंडर दिस स्कीम इज वर्किंग.
और ये जो स्कीम है वो प्रमोट करती है डिसेंट्रलाइज फार्म फ्रेंडली एक्सटेंशन सिस्टम, और इसके अंदर ग्रांट इन एड भी दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को विथ एन ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट टू मेक द लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस, और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट थीमेटिक सेंटर्स में उसको फार्मर यूटिलाइज कर सके एट अफोर्डेबल रेट. द टेक्नोलॉजी शुड बी देयर, एटलीस्ट दे कुड इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, और अल्टीमेटली जो उनकी इनकम है उनमें भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है. सो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम. नाउ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जहाँ पे कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाई जाएगी विथ इफेक्टिव पॉलिसिंग थ्रू द ई गवर्नेंस. और ये जो सिस्टम है दिस विल इंक्लूड द नेशनल वाइड ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम बाय मोर देन 14,000 पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री. तो जितने भी डेटा बेस हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि ट्रैक करने में आसानी हो. एंड द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राइट. सो दिस इज समथिंग विच वुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड this would be improving the overall tracking system in the country. Now Nari Shakti Puruskar, this was being awarded to individual, group and NGO. ये जो पूरी अवार्ड है that encourages women to participate in the decision making. यहाँ पे women को empower करने के लिए आप अपने जनरल स्टडीज के पेपर 1 में खास करके मेंस में जब women empowerment की बात की जाए तो इस तरह के पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं. Even you can quote this type of point in the ethics paper as well. सो वुमेन के स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में, एंड अगेन इट विल फैसिलिटेट द बेसिक कम्युनिटीज ऑफ द रूरल वुमेन, और प्रमोट करना ताकि जो नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर, दे वुड बी ऑल्सो इम्प्रूविंग इन दिस पार्ट एज वेल. सो दिस वॉट अंडर द नारी शक्ति पुरस्कार. Now, मेरी सहेली, this is an initiative. This was launched by the Railway Protection Force, जो RPF है, that is dedicatedly working under the Ministry of Railways. तो Southern Eastern Railway जो है उन्होंने इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है. और ये जो इनिशिएटिव है this was launched to provide the safety and security to lady passenger. जो भी लेडी पैसेंजर्स ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ये फोर्स बनाई गई है. RPF की डेडिकेटेड फोर्स है that would be named as मेरी सहेली, right? So this would be there with the originated station and terminating station. So these initiatives is definitely helping in the course of women empowerment in the country. Now National Coal Index, this was there. It is again important. Prelims में आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है. This the price index which reflects the change of price level. जो कोल में जिस तरह से चेंजेस हो रही है रिलेटिवली हर मंथ उसके चीज़ों को देखती है. और जो बेस ईयर है NCI की दैट इज 2017 and 18. तो प्राइजेस ऑफ कोल क्या है हर चैनल में अलग तरह से वेरी करती है. दैट इंक्लूड import existing today can take into the account in the NCI. और NCI कंपोज करती है 5 सब इंडेक्सेस को, 3 from the non cooking coals and 2 from the cooking coal, right? So static खास करके इस तरह के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. So national coal index is again important for you. And e-Chhavni portal, recently the Defense Minister of India has launched e-Chhavni portal and mobile app. ये खास करके जो कैंटोनमेंट्स एरिया होते हैं, जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे मदद करेगी. द पोर्टल वुड बी क्रिएटेड विथ एन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सिविक सर्विसेज टू 20 lakh रेजिडेंट इन द 62 कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया इन दिस कंट्री, राइट. सो द बेसिक कम्युनिटीज दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड दैट वुड बी देयर. एक मोबाइल ऐप होगी जो कि सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करेगी, और वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड में जो लोग रह रहे हैं दे वुड प्रोवाइड द बेसिक कम्युनिटी सर्विसेज टू देम, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द e-Pod Chhavni. And we have mostly covered the news. This was the news that we had from the February sections, and all the important news have been discussed. And you can watch our daily topic-wise news analysis, which used to be happen every day. And the coverage is both from the Hindu and Indian Express. This will save a lot of time, considering the paucity of time and setting of the prelims examination. You need a time to stick to the static portion. So you can rely upon this daily topic-wise news analysis, where all the news are covered. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe APTI PLUS Academy for Civil Service on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.